Good afternoon, students. Let us start our today's session. Myself, Neeta Manohar Kedar, Dr. Neeta Manohar Kedar. Today we are going to see document manipulation and formatting part 2. The topics which we are going to cover today are alignment of text, spelling and grammar checking, and shortcut keys. Now, firstly, let us see what does text alignment mean. Now, whenever you graph any particular letter or any particular document, here MS Word will provide you the facility to align the text or paragraph so that it gives you a good look and a kind systematic look. Now, text alignment is nothing but it is just a word processing software which allows a user to horizontally align the text on the page or on the document. The composition of the text document using different text position on the whole or selected part of a page. That means you can select some part of your page or the whole page also you can select, and then you can align your text as you wish. Here there are some types of text alignment. Now you just have to put the cursor, you have to select the document, you have to put the cursor and align the text at different margin whichever you need. Here there are various types of text alignment. The first is right alignment. This starts each new line of the document on the rightmost margin of the space. That means if you want to align the text at your right side, you have to click right alignment. The left alignment is, as you know, that as a default only alignment in the most of the MS processing word software. Here it starts from the left side only. And here the third one is your center alignment. This position starts each new text and text block in the center or middle margin of the page. That means if you want to bring your text on the center of the page, you have to click center alignment. There is a fourth type which is known as justified alignment. Now this aligns text with right and left margin and tries to fill as much as empty space as possible. It enables a straight margin on both of the page horizontal edges. Here there is an image in which you can see that here when you go to your home page, you will see at the paragraph there are these four alignment types. This is your left alignment. If you have to make the alignment at left, this is your center alignment. This is the right alignment and justified alignment. Now, if you want to make your text or your paragraph at a left alignment, then in your MS Word, we are now going to learn certain steps. With the help of such diagrams, it will make you clear how to make the text alignment at the left side. In your step number 1, first open your MS Word on your PC. Second step, now open your document, whichever document you want to create and you want to perform this operation. For example, कोई भी document ले लो या कोई भी paragraph ले लो जिस पे आपको alignment करनी है. Here, this is example. मानो कि यहाँ पे एक document मैंने भी ले लिया है. Third step आपको क्या करनी है? तो you have to select the paragraph text which you want to make left alignment. मतलब जितना paragraph आपको left alignment करनी है उतना ही select करना है. अगर आपको पूरा करना है तो आपको select all करके आप पूरा select करके left alignment ले सकते हो. First step, now you go to the home tab. Here you can see the circled green circle mark, home tab, and click on that.
Whenever you click on that, here you will see that you will get a paragraph section in the home tab itself, and click on the left alignment text button. When you will click on this text alignment, your document or your paragraph will automatically get to your left alignment. And here at the sixth step, your paragraph will be aligned to the text successfully as it is shown in the image itself. Now there are some shortcut keys also through which you can do the left alignment text. The shortcut key is Control L. Now what is the step for doing this? How you will use a shortcut key? Just same. First open your document on your PC. Then you have to select the paragraph, whichever you want to make your left alignment. And now use your shortcut key, that is your Control L. Whenever you will implement this Control L, the paragraph text will be aligned to the left successfully. So in this way, the left alignment, how we have to do the left alignment, I have explained you. Now let us see the center alignment text. The paragraph or text will be center aligned if paragraph or the text is in the center of the left and right margin of the page in MS Word. Now we will learn the step how you can make your paragraph center aligned with the help of this diagram. Your step number 1 is, as usual, open your MS Word on your PC first. Secondly, open your document or create a new one, whichever you want to perform the operation. On the third step, you have to select the paragraph, whichever you want to make the center alignment. As usual, go to the Home tab and click on now the center alignment. Here you will see that whenever you click the center alignment text button, the paragraph text is aligned to the center successfully. In this way, you can make your paragraph or your document center aligned. Now here also you can use some alternative keys by using some shortcut keys. Now center alignment text के लिए shortcut key है Ctrl+E. अभी how to use it? Same thing you have to repeat. Again you will go to your MS Word on your PC, open your document, whichever you want to make align, select the paragraph, whichever paragraph you want to make center align. Now you can use your shortcut key, that is Ctrl+E, and the paragraph text is aligned to the center successfully. In this way, you can also make your paragraph or your document right aligned text. What we have to do? Same thing we have to repeat. First, go to your MS Word on the PC, open a document, select the paragraph. After selecting, go to the Home tab. Here you can see the Home tab and click on that. Whenever you will click, you will go to the paragraph section, and then at the Home tab, click on the right alignment text button. When you will click on this button, ultimately your paragraph will text aligned to the right alignment. Now, what is the alternate way of using this shortcut key? So again, if you want to make right alignment text, you have to just select the document, select the paragraph, whichever you want to make the right alignment. And now with the help of the shortcut key, that is Ctrl+R. Ctrl+R, whenever you will click this, the paragraph will align to the right successfully. Now let us see how we can make the paragraph text justified. Now, for the justified, we will see the steps again. First, open your MS Word on your PC. Open the document which you want to perform. Now, select the paragraph text which you want to make justified text. Go to the Home tab as usual. And after when you go to the Home tab, you will go to the paragraph section. And in the Home tab, you have to click the Justify Text button.
Here the paragraph will align to the justified text successfully. Now this thing also you can do in using the shortcut key. What is the shortcut key for this type of alignment? For justified text, Control J. What you will do? First open the MS Word on your PC, open a document, select the paragraph whichever you want to justify it. Now you use the shortcut key, that is Control J. The paragraph will align to the justified text very successfully. So students, here we have seen how we can align our paragraph or our text at right, left, center and justified. Now in MS Word, as the alignment is important, it is also very important to have proper spelling and grammar in your document, because we all know that errors not only destroy our credibility, but it is also an effective way of communication. Now, it is also very important to check your documents, that means the spelling, the grammar mistakes, before you circulate or before you distribute your document to somebody else. And unfortunately, Word has makes it easy. Now the spelling and the grammar checker are built into Microsoft Word to help you to find such mistakes. So if you want to correct them before putting your document into the Word or making it now, by default itself, Microsoft Word check the spelling and grammar automatically as you type. Matlab, whenever you will do the typing, the Microsoft Word will automatically check your spelling and grammar. And when you will operate it, you can see that there are wavy red lines which will indicate that there is a spelling problems. अपने आप आपके डॉक्यूमेंट पे, आपके पैराग्राफ पे रेड लाइन आ जाती है जो हमें बताती है कि यहाँ पे स्पेलिंग प्रॉब्लम है. और अगर ग्रीन अंडरलाइन आती है तो वो इंडिकेट करती है कोई ग्रामेटिकल प्रॉब्लम आपके डॉक्यूमेंट में है. तो अभी हम कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे द स्टेप्स आर लाइक फ्रॉम द प्रूफिंग ग्रुप on the review tab. Here you can see the red circle, review tab. You have to just select the spelling and grammar. The Microsoft Word will look for the spelling and grammar errors. Start from location of your cursor in the document. And then the word finds a spelling error. Navigation pane similar to the one below will appear. मतलब for example, अभी आपने यहाँ देख सकते हो कि किस तरह से अगर आपकी कोई स्पेलिंग रॉन्ग है तो अपने आप आपके यहाँ पे नेविगेशन आ जाते हैं जो आपको बताते हैं कि क्या स्पेलिंग आपको लिखनी चाहिए. अगर आपको चाहिए तो आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हो. यहाँ हम देख सकते हो कि अगर ये ऑप्शंस आपको अवेलेबल होते हैं. लाइक इग्नोर मतलब क्या है? तो टू लीव द टेक्स्ट एज इट इज स्पेसिफाइड इंस्टेंट, मतलब आपको कुछ नहीं करना है, जैसे वैसे रखना है. बट नोटिफाइड इट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइंड द सेम थिंग अगेन, क्लिक इग्नोर. इग्नोर और क्या करना है? मतलब टू लीव द टेक्स्ट एज इट इज एंड फ्यूचर इंस्टेंट क्लिक इग्नोर ऑल, मतलब आगे जाके भी ऐसा ना हो इसलिए फ्यूचर, इसलिए इग्नोर ऑल. ऐड करना मतलब क्या? मतलब जो भी वर्ड आपके डिक्शनरी में वहां पे आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो उस वर्ड पे आप लोग क्या कर सकते हो, जो भी वर्ड आपका मिसस्पेल्ड है उस पर क्लिक करो तो वो वर्ड वहां पे ऐड हो जाएगा. और चेंज करने के लिए दिस विल करेक्ट इंस्टेंट द मिसस्पेलिंग बाय क्लिकिंग द चेंज, मतलब अगर चेंज करो तो वर्ड अपने आप चेंज हो जाएगा. और चेंज और करोगे तो टू करेक्ट ऑल इंस्टेंस ऑफ द मिसस्पेलिंग थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां ये स्पेलिंग गलत है वहां पे आप अगर चेंज और कर दोगे तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स क्लियर हो जाएगी. द फोर्थ स्टेप, इफ द वर्ड्स फाइंड्स अ ग्रामर एरर, अगर कोई ग्रामर एरर आ जाता है, जैसे हमने कहा स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो रेड लाइन आती है, ग्रामर मिस्टेक हुई तो ग्रीन लाइन आ जाएगी. तो सेम वे एक डायलॉग बॉक्स, फिर से सिमिलरली एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा जो आपको ग्रामर मिस्टेक्स दिखाएगा. और फिर से वही है, अगर आपको if you want to leave the text as it is in the specified instant, you will click ignore. If you want to change, accept the word suggested correction, मतलब जो भी वर्ड वहां पे दिए गए हुए जो
सजेस्टेड है आपको कि यहाँ पे ऐसा वर्ड चाहिए करेक्शन के लिए, तो आप उसको क्लिक करो चेंज के ऊपर, तो वो वर्ड अपने आप वो ग्रामेटिकल मिस्टेक चेंज हो जाएगी। एट द बॉटम ऑफ द पेन, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, एट द बॉटम ऑफ द पेन, यहाँ पे आप देख सकते हो कि you will see that an explanation of the grammar error that word has detected, मतलब आपके डॉक्यूमेंट में क्या ग्रामर मिस्टेक है, क्या है और क्या होना चाहिए, what should be there, what exact grammar sentence should be there, it will come over here. Then whichever you will feel is right, you have to just click. Ultimately the things will change in your document. Now the one useful feature when checking the spelling and grammar is words autocorrect feature. मतलब when the word indicates a word in the document may be misspelled or incorrect with a squiggle under it. Squiggle मतलब underline it. उसके नीचे अगर underline आती है तो मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर वैसे स्टाफ मीटिंग लिखा, अगर स्टाफ की स्पेलिंग आप देख सकते हो ये गलत स्पेलिंग है, दैट मीन इट इज मिसस्पेल्ड और इनकरेक्ट स्पेलिंग, इसके ऊपर एक रेड लाइन आ गई है, आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट राइट क्लिक करोगे तो आपको ऐसे कुछ सजेशंस आ जाएंगे एक बॉक्स में, आपको सिर्फ क्या करना है, यू हैव टू जस्ट सिलेक्ट द राइट वर्ड टू रिप्लेस दैट रॉन्ग वर्ड, मतलब स्टाफ मीटिंग, तो स्टाफ में आएगा तो स्टाफ आ जाएगा, STAFF स्टाफ मीटिंग, तो आप सिर्फ उसके ऊपर क्लिक करो, अपने आप वो स्पेलिंग मिस्टेक करेक्ट हो जाएगी। अभी ये स्पेलिंग मिस्टेक्स को भी हम लोग कुछ शॉर्टकट की से यूज करके we can make the correction. What is the thing? Just keep in mind the shortcut key for the is Alt plus F7. This key are there on your keyboard. Now how it will work? First misspelled word will come. If the first highlighted word at the top of the list is correct, just hit the enter, or you can arrow to the correct one और ignore it और add it to your dictionary, आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब यहाँ पे दिखा है देखो, अभी ये चार्ट्स दिखा है, चार्ट्स का स्पेलिंग रॉन्ग है, बस आपको एक क्या करना है, आप अगर कंट्रोल F7 क्लिक करते हो तो ऐसे एक बॉक्स आ जाएगी सजेशन बॉक्स जो आपको स्पेलिंग देता है, फिर आपको जो भी स्पेलिंग राइट लगती है यू हैव टू जस्ट क्लिक दैट स्पेलिंग, अपने आप स्पेलिंग करेक्शन हो जाती है। अगर आपको नहीं चाहिए तो इग्नोर इट, अगर आपको लगता है कि ऐड टू डिक्शनरी करना है तो आप ऐड टू डिक्शनरी भी कर सकते हो। Now, as alignment is important, as I told you that spelling grammar is important, same way, there are certain shortcut keys which you can use as an alternative way to do something that you typically do with your mouse. मतलब हम माउस का यूज करके काफी बार चीजें करते हैं, तो बहुत ही अगर आसानी से और सिंपल टेक्निक से अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो we should definitely use some shortcut key in our MS Word. Now here we can see that there are various lists, or we can say there are various ways through which we can use this shortcut key. Now Control plus A, that means all select, that means you can select all the material from your document. Control B to make it bold, Control C to copy the material, Control D default font set, Control E, जैसे मैंने अभी कहा था अगर आपको अलाइनमेंट सेंटर में करनी है तो कंट्रोल E, कंट्रोल F फाइंड, कुछ भी आपको अगर कोई भी वर्ड फाइंड आउट करना है तो कंट्रोल F दबाओ, एक सजेशन बॉक्स आता है उसके ऊपर आपको जो वर्ड फाइंड आउट करना है यू हैव टू जस्ट टाइप इट। कंट्रोल G मतलब गो टू, कंट्रोल H रिप्लेस करना हो तो, कंट्रोल I इज फॉर इटैलिक, अगर आपको फॉन्ट इटैलिक में चेंज करना है तो कंट्रोल I, कंट्रोल J टू मेक योर अलाइनमेंट जस्टिफाई, कंट्रोल के हाइपरलिंक, कंट्रोल L अलाइनमेंट टेक्स्ट लेफ्ट में अगर अलाइनमेंट करना है, कंट्रोल M हैंगिंग इंडेंट, कंट्रोल N न्यू डॉक्यूमेंट तैयार करना हो तो, कंट्रोल O टू ओपन, कंट्रोल P दैट मीन्स अगर आपको प्रिंट निकालनी है तो जस्ट यू हैव टू पुट कंट्रोल P, कंट्रोल Q ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, हर पैराग्राफ के बाद आपको अगर स्पेस ऐड करनी है तो कंट्रोल Q को आपको हिट करना है, कंट्रोल R
alignment text to right. Control S मतलब save as, document को save करना है. Control T, that means left indent. Control U, that means you want to underline any particular word. Control V, if you want to the copied material, if you want to paste, तो Control C करके बाद में हम लोग Control V करते हैं ताकि मटेरियल पेस्ट हो जाए. Control W to close. Control X to cut or to delete, we can say. Control Y, repeat or redo. And Control Z for undo. So these are some shortcut keys which you can definitely use. Dear, thank you for your cooperation and patiently listening. Thank you very much.